बीपी रिवर्स होने लगता है। आपने अभी इतना कुछ सीखा और शायद आपके मन में कुछ सवाल आ रहे होंगे, तो हमें कांटेक्ट करने के लिए हमारी वेबसाइट www.satvicmovement.org विजिट करें और सात्विक जीवन शैली पर अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारा YouTube चैनल सात्विक मूवमेंट जरूर देखें। It is said that science has an answer to every question. Yes, it has the answer to most questions of the outer world. But when it comes to the questions of our inner world, the world of thoughts and feelings, consciousness and spirituality need to be integrated. Brahma Kumari's SpARC Wing presents a 2-day e-conference, Expanding Horizons, Science, Consciousness and Spirituality. नमस्कार, ओम शांति और गुड इवनिंग। शाम का समय अक्सर अध्ययन का होता है। जब बच्चे छोटे होते हैं, स्कूल जा रहे होते हैं, तो शाम के समय में यही कहा जाता है, बहुत खेल लिए, अब आके थोड़ा पढ़ भी लो। शाम का समय पूजा पाठ, आराधना, अध्ययन के लिए इसीलिए रखा जाता है कि मन थोड़ा रिलैक्स होता है और उस समय पर बहुत सारी चीज़ें वो ऑब्जॉर्व कर पाता है। सुबह और शाम को अक्सर करके लोग आध्यात्मिक चिंतन के लिए रखते हैं। ऐसे में इस शाम के सत्र में हम आपका स्वागत करते हैं। स्वागत की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है। लोग गीत से, संगीत से, नृत्य से अनेकों विधाओं से स्वागत करते हैं। नृत्य हमेशा उत्साह के साथ ही होता है। कोई निरुत्साहित होकर नृत्य करे ऐसा संभव नहीं है। हर्षोल्लास को अपने मन में भरने के लिए और हम सबको हर्षित करने के लिए हमारे साथ स्वागत नृत्य प्रस्तुत कर रही है कुमारी श्रद्धा। ब्रह्मा कुमारीज अंबरनाथ मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आइए आनंद लेते हैं इस स्वागत नृत्य का। सबके प्यारे आप पधारे, गाए ये मौसम, ऐसी खुशी में बजने लगे हैं सात सुर सरगम। सबके प्यारे आप पधारे, गाए ये मौसम, ऐसी खुशी में बजने लगे हैं सात सुर सरगम। खिल उठा है हर एक मन आपके आने से, गाते बाहर मधुर रागिनी आपके आने से, आपके आने से आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। ऐसा लगता नीलांबर ये फूल बरसाए, रंग खुशी का बिखरा बिखरा महफिल को सजाए। ऐसा लगता नीलांबर ये फूल बरसाए, रंग खुशी का बिखरा बिखरा महफिल को सजाए। बड़े कदम जो यहाँ आपके, धन्य हुए हम सारे, महक उठे हैं झूम झूम कर कहते ये नजारे। बड़े कदम जो यहाँ आपके, धन्य हुए हम सारे, महक उठे हैं झूम झूम कर कहते नजारे, कहते नजारे। आपका स्वागत है, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। सबके प्यारे आप पधारे, गाए ये मौसम। बहुत बहुत धन्यवाद कुमारी श्रद्धा का, जिन्होंने इतना सुंदर स्वागत नृत्य हम सबके सामने प्रस्तुत किया। शाम के सत्र के लिए हमने बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक चुना है,
engaging the spiritual mind, the healing power of God. आध्यात्मिक चिंतन को करने से, अपने मन को ईश्वर के चिंतन में लगाने से क्या हीलिंग हो सकती है? क्या ये हीलिंग की शक्ति ईश्वर से प्राप्त होती है? इसी विषय पर हम चिंतन करेंगे। आज के सत्र में हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर बिंदु कुट्टी जी हैं, जो प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोफिजियोलॉजी, इंचार्ज प्रोफेसर एंड कोऑर्डिनेटर ऑफ निमहांस सेंटर फॉर कॉन्शियसनेस स्टडीज। आइए सुनते हैं डॉक्टर बिंदु कुट्टी जी से। Expanding horizons, science, consciousness and spirituality, a very interesting theme and the need of the hour. This topic is so relevant to the present day society, where we have man-made sufferings, agony and distress. So we often wonder that we human beings are highly evolved and highly intellectual beings, and why we are not able to live peacefully on this earth. So the reason for this is that we divert our attention exclusively for worldly affairs. So then the outcome will be only this negative outcomes, sufferings, agony, distress and so on. So now how do we help ourselves? So in this context, this conference is so relevant, and that is the need of the hour. I really appreciate the organizers for selecting this particular theme, because spirituality is required, is very much needed for our society, especially when we live in this materialistic world. So when we take an inward journey that help us to discover ourselves, that help us to manifest all the virtues that is within us, and definitely that help us to eradicate all sufferings on this planet. And sure, that should be the purpose of our life. So how do we do this? Manifestation. See, for example, the spiritual life helps us to manifest many of the inner virtues. We become more positive. Our perception about life changes. We become relaxed, and all the negative things will be vanished. And we also gain lot of intellectual capabilities, lot of mental capabilities. We become compassionate, we become generous, we become altruistic, and we become holistic. And that is how, when we become selfless, so there is a transformation. We can see a transformation from a self-centeredness to a selflessness journey. And this selflessness definitely helps us to eradicate sufferings from this world, and that is the purpose of life. So I hope that the conference will be a great success, and it will be a great learning opportunity for the participants. Thanking you once again, and thank you so much for making me to be a part of your conference. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर बिंदु कुट्टी जी बेंगलोर से हमारे साथ जुड़ रहे थे और उन्होंने आज के विषय पर उनके विचार व्यक्त किए। हमारे इस सत्र के की नोट स्पीकर के रूप में हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी जयंती दीदी जी, जो ब्रह्मा कुमारीज के अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका हैं और ब्रह्मा कुमारीज के यूरोपीय सेवा केंद्रों की निदेशिका भी हैं। ब्रह्मा कुमारीज के साकार संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा से इन्होंने अलौकिक पालनाएं ली और आध्यात्म की इस अलख को विश्व के चारों ओर फैलाने के लिए विदेश सेवाओं में कदम बढ़ाए। आज 50 वर्षों से भी अधिक समय से ब्रह्मा कुमारीज की इस ईश्वरीय सेवाओं को आगे बढ़ाते हुए देश विदेश में ब्रह्मा कुमारीज के इस आध्यात्मिक ज्ञान को फैला रही हैं। एक जानी मानी राजयोगिनी है। आइए सुनते हैं उनसे आज के विषय पर उनके विचार। Om Shanti. Very warm greetings of peace to all my sisters and brothers joining us for this online event with SpARC. The topic is a very beautiful one, the healing power of God's love. Well, the first is to be able to understand that God cannot have a human form. God is that image that you see behind me. And of course, the image is an enlarged version, but it gives you an idea.
but the form of the Supreme is that of an infinitesimal point of light. No bigger, no smaller, it can't be smaller, and infinitesimal means that it's like huge, 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 in the sense that from that point of light, the light that radiates and emanates can be experienced anywhere on the planet. The qualities that exist are as vast as the ocean. And so God is the being who has all of these positive attributes within that being. And that being has all qualifications of relationships that we could describe as mother and father and friend and companion and teacher and guru, the Satguru, the true guru, the guide. So we are actually able to receive everything that we need from our connection with this being, the Supreme, the Divine. And part of what we receive from the Divine is an experience of healing. We understand that mind and body, or rather soul and body, are intimately connected. The form of the soul is the same, just a point of light located here in the center of the forehead, just in front of the brain, in front of the pineal gland. And this is where they always show the location of the third eye, the eye of wisdom. And so wisdom is actually within the soul itself. And this is the location of the soul in the physical body. And you can see how if a driver sits at the controls of the car, then he's going to be able to manage to take the car to the destination of his choice. If the controls are elsewhere and the driver is sitting somewhere else, it would be a bit challenging. In the same way, in terms of control mechanisms of the physiology of this physical body, that would work through the brain and all the systems that nature, drama, God have put in place for us. A perfect, perfect system, so intricately balanced that if even there's something that's out of place for just a hairbreadth, then things go wrong. But everything delicately balanced together and everything works fine. It's a miracle, truly a miracle. And so whatever happens to the body has an impact on the soul, the mind. Whatever happens to the mind, the soul, also has an impact on the physical body. And so we need to have healing on both levels, on the spiritual level, but also on the physical level. And within the spiritual level, because I'm talking about our thoughts, our feelings, our emotions, and our personality, our understanding, our reason, our logic, all of this is contained within this point of light, the soul that I am. And so all the hurtful experiences I've been through, certainly in this life, but also maybe from past births, who knows? But certainly in this life, all of that is recorded within this point of light. And sometimes those hurts are so strong that they manifest as physical wounds sometimes, or physical ailments very often. People who study holistic health would probably say that over 90% of our illnesses are rooted in the soul itself. And then we see the manifestations on the external level in the physical body. But I'm not going to talk so much about the healing of the physical body, because there are many experts out there in the world who can help you with that. But I want to focus more on the healing of the inner being, the soul. When someone is hurt,
whether it's the knee that's grazed or whether it's the soul that's feeling the suffering, then so often a mother's love is able to kiss away the pain, if it's a physical one, but also the mother is able to give a hug and a cuddle to the child, and the hurt is forgotten and doesn't leave such an imprint. God, our Supreme Mother, absolutely in the same way, reminds us, come to me, I am here for you. And in meditation, when I make that connection of the soul with the Supreme Soul, yoga, union, Rajyoga, the highest union, then in that experience of the connection with the power of the divine, the power of the Supreme, one has that experience of being filled with a huge amount of love, unconditional love, non-judgmental love, love that is infinite, love that has no end, love that seeks nothing in return except our well-being. And so in this connection of yoga, as I experience God's love, all the hurts that I carry within the soul are washed away. The soul is able to start healing. Takes a little bit of time, but the healing process begins to work because God gives us the support that we need to be able to wash away the dirt and rubbish that has accumulated where the wound has been sustained. If you don't treat a wound quickly, then it can fester and it can cause infection and many problems can arise. And in this case also, sometimes something happened 40 years ago, 50 years ago, and I still carry it in my heart. But surely it's time to allow God to let the process of healing work its way if I choose that this is what I want to do. And so in that experience of connecting with God, it's as if the dust and the dirt that have accumulated around that feeling of hurt, firstly, all of that is washed. And then the wound is given ointment with the power of God's love. And if I keep applying that ointment of God's love every day, then a moment comes when I say, I don't even think about it anymore. It's definitely not hurtful for me to think of that person or that situation or anything connected with that. It happened, it's okay, and now I'm actually fine. And so that process of God's love actually healing the soul is something which is very real and can truly, truly help us let go of the past. And also, as I fill myself with God's love, my perception begins to change because it's as if my heart has opened up and is enlarged. And now in this big heart, there's the possibility of being able to forgive. In the process of healing, these two things are also vital. Being able to forget and being able to forgive. And the first step of forgiving is an important one. That is the first step. Sometimes forgetting takes a very long time, but certainly the first step is that of being able to forgive. And when I realize that in forgiving another, I am allowing myself to be free again. Otherwise, I carry that burden with myself, and it's very difficult to move forward. And so let me first experience God's love as the power that expands my heart and allows me to forgive so that I can let go. And that situation is no longer causing me any additional pain. My forgiveness releases me from any pain that I was experiencing.
And then the next step, to allow the process of healing to happen for the old wound that is still there. And the ointment that I spoke about, God giving me his healing power of love, of light, of purity, of peace. God's qualities know no boundaries. And in fact, when I start experiencing peace, I also start experiencing love. When I start experiencing love, I also begin to have a glimpse of truth, and I feel myself grow in wisdom. So all of God's qualities are deeply connected with each other. And so God's love begins that process of healing, and every day my heart becomes lighter, and it's easier and easier to face the new day, because I'm filled with hope and with confidence that yes, tomorrow can be much better than yesterday. And however old yesterday may be, maybe it's decades old. Sometimes in families, we pass on our sorrows from generation to generation. But allowing God's love to start the process of healing means I begin to feel lighter, I begin to feel happier, more cheerful, and I'm not carrying pain in myself anymore. There's a sentence I want to share that's very, very crucial. Hurt people hurt people. If I'm carrying hurt and pain, what's going to happen? Well, you know about it. I'm going to be hurting others. The words that I say may be filled with harshness, with bitterness, with anger, any of these things. But if I've dealt with the issues, and the path of Rajyoga explains many, many things, and with that clarity of understanding, we're able to move on. And so definitely, allowing that process to heal the soul, and sometime later, I can't give you a date for it. It could be a day, it could be a month, it could be longer. But you will actually feel that now that situation, even if it comes into your mind, isn't causing you any pain, any sorrow whatsoever. You've been able to go beyond it, and you've been able to literally touch the light and absorb that light of love within yourself. And so things are resolved and you feel fine. You don't hold any grudges, that you don't hold any bitterness, and literally you've been set free. And so it's an amazing sensation, amazing feeling of freedom. And so my hope is that you'll experiment with this idea of sitting quietly, you and the divine, just the two of you, and allowing God's light of love to reach you and to be able to heal you, so that then things get settled forever, not just for a day or two. Sometimes what happens is that we try something that somebody has suggested, and it's great because for a day or two I'm fine, and then there's a trigger and something else emerges because it wasn't dealt with. You were able to set it to one side for a short time, but you didn't know how to settle it. And so connection with God means that my own capacity as a soul has developed and grown. An important factor is that I mustn't keep repeating those same stories from the past. Because if I do that, it's like raising the wound again. You know, you've got a wound and it's been bandaged carefully. And if you keep lifting the bandage to see what's going on, there's never going to be the possibility of healing. It needs time and it needs your patience. And so leave the bandage on.
don't remove it, which means don't emerge it in your mind. And even if it emerges in your mind, certainly don't repeat it in words. Every time I repeat a story that's been painful, it stamps the soul further and further with that. The hurt goes deeper and deeper, and I've done that for a long time. I can't continue in that way anymore. I'm going to turn things around for myself. And then, yes, I'll see things turning around for others also. But the first thing I need to do is to turn it around for myself so that I don't get caught in that rut in my mind of the same image, the same thought, and it gets deeper and deeper, and my aggravation gets stronger and stronger, and I'm absolutely uncomfortable inside myself, at war with myself, in conflict with myself. And so, of course, if I'm still in that condition and I meet that person again, the words that come out of my lips just naturally, instantly, are going to cause a lot of pain and sorrow. Enough. I've done that enough. I don't want to continue in that way any longer. And so today, put a full stop to pain, take God's love, and let that love flow over you, and absorb as much of that love as you choose. You don't have to go through an intermediary. I, the soul, am the child of the divine, the supreme. So setting aside bodily beings, setting aside bodily images, even the images of the Dev Atmas, the Devtas, that's a whole different story. But I, the soul, detached from this skin of mine, from this body of mine, I focus on the divine, this being of light. And when I do that, there are no limits. In the connection, God's light, God's love reaches me, and I can stay there as long as I choose. And so experiment with this, and you'll be amazed at how you feel. You're lighter, your heart is easier. It's even possible to actually finish it completely so that you totally don't remember the story, the situation. You've been able to pack it up and throw it into the ocean. Let the ocean take care of it. You don't have to. So have a very good conference and enjoy every moment. And until we meet in physical person, stay well, stay safe. Om Shanti. बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राजयोगिनी जयंती दीदी जी का, जो खास हमारे साथ लंदन से जुड़े आज के इस विशेष ई कॉन्फ्रेंस में उनके विचार व्यक्त किए हमारे की नोट स्पीकर के रूप में। हमारे इस सत्र के मुख्य अतिथि के रूप में जुड़ रहे हैं हमारे अगले वक्ता पद्मश्री डॉक्टर मैली वाहनन नटराजन जी, जो भारत के जाने माने ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। आइए जानते हैं उनसे उनके विचार। I bring greetings from Chennai to this virtual conference on science, consciousness and spirituality. My thanks to the Brahma Kumaris and the SpARC Center for inviting me for this conference. This conference covers the concerns of society in general and researchers in particular as they address the challenges in humanity for a better future with science and spirituality. For the past 18 months, all human beings have gone through the COVID pandemic with a lot of negative emotions. These produce inner weakness and a weak mind. Most doctors know how to heal physical weakness and illness. Only some know how to heal weakness of mind. Doctors are aware of the mind-body connection, and many of them successfully motivate patients to use their mind to heal the body. The saying, "Doctors treat, God cures," is popular amongst medical professionals. As an orthopedic surgeon myself, I tell my patients that I will operate and plate the fractured bone, but only God cures the fracture and makes it heal.
You may all be surprised to know that in my consultation room there is a board with the words, God is still the best doctor and prayer is still the best medicine. This plenary session on engaging the spiritual mind, the healing power of God, is very appropriate. A spiritually enlightened mind is a powerful mind, and when we include spirituality, there is a transformation in our lives, positive thinking, self-mastery, and harmony with others. The break from my busy lifestyle during this pandemic was an opportunity to study, see, and hear about the Brahma Kumaris, the spirituality, Rajyoga, traffic control of the mind, etc. I chose to receive God's healing energy to make my mind powerful and life peaceful. My special thanks to Sister Neelima, Sister Beena, and Sister Jayanti at the Brahma Kumari Center at Annanagar, Chennai, for initiating me in the process of meditation. 2 years ago, Sister Shivani gave a mesmerizing talk in Chennai, and I am grateful to her for drilling into my mind the concept of supremacy of the thought. Sankalp se siddhi, thoughts manifest. This has been an eye-opener to me. The Raman family, Mr. Kalyan Raman, Mrs. Sushila Raman, and Ms. Kalpana Raman were also instrumental in initiating me to this spiritual journey. Thank you and Om Shanti. मैं धन्यवाद करना चाहूँगा पद्मश्री डॉक्टर नटराजन जी का, जिन्होंने हमारे साथ जुड़कर इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाया। अब वक्त है एक मेडिटेशन एक्सपीरियंस को करने का, क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस होने के साथ साथ एक मेडिटेशन रिट्रीट भी है। इस बहुत ही सुंदर मेडिटेशन एक्सपीरियंस को कराने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ ब्रह्मा कुमारीज के स्पार्क के कोर ग्रुप मेंबर और वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका ब्रह्मा कुमारी छाया दीदी जी का। ब्रह्मा कुमारी छाया दीदी जी ब्रह्मा कुमारीज के बैंगलोर सेवा केंद्र में सेवाएं देती हैं और ख़ास मेडिटेशन के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आइए जुड़ते हैं उनके साथ और करते हैं गाइडेड मेडिटेशन। ओम शांति। इस सुंदर से सत्र में हम ये अनुभव करेंगे कि कैसे हम आध्यात्मिक मन को परमात्मा की शक्ति से अनेक बातें या परिस्थिति या कोई भी समय अनुसार आने वाली परीक्षा से अंदर के घाव को हम हील कर सकते हैं। बातें तो आती हैं, परिस्थितियां हैं, लेकिन हम अपने मन को उन सभी बातों में, परिस्थितियों में इंगेज कर दिए हैं तो मन की जो शक्ति है वो क्षीण होती जाती है। इसलिए कहा गया है कि समय और परमात्मा, टाइम एंड गॉड आर द ग्रेट हीलर्स। तो समय पर हम सब कुछ भूल सकते हैं, घाव को भर सकते हैं, लेकिन उससे अधिक चाहिए हमारे अंदर परमात्मा की शक्ति, जिसको हम कहते हैं कि गॉड्स हीलिंग पावर। तो इस शक्ति की प्राप्ति के लिए हम एक सुंदर अभ्यास करेंगे। आइए हम सभी जहां भी बैठे हैं अपने स्थान पर विराजमान हो, अपने अपने शरीर को स्थिर कर देंगे। जैसे जैसे इस शरीर की स्थिरता आती जाएगी, हम देखेंगे कि मन में अनेकानेक संकल्प चल रहे हैं। इन संकल्पों के बहाव में हम पाते हैं कि कई ऐसे संकल्प, ऐसे संदर्भ, ऐसी परिस्थितियां हमारे मन को हलचल कर देती और हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न कर देता है। ऐसे समय पर हमें परमात्मा की शक्ति, परमात्मा की दिव्य अनुभूति की जरूरत है। तो कुछ क्षण के लिए अपने मन के इन संकल्पों को देखते हम एक सुंदर संकल्प देंगे कि मैं इन परिस्थितियों से, बातों से अलग हूं।
मैं एक शक्ति हूँ। इस शरीर को चलाने वाली मैं सुंदर ऊर्जा हूँ। मेरे अंदर लाइट की और शांति की शक्ति है। इन्हीं संकल्प से, संकल्प के साथ साथ वाइब्रेशंस का भी अनुभव करेंगे कि मैं लाइट हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ। लाइट और शांति के वाइब्रेशंस मेरे अंदर फैल रही हैं। इस सुंदर अनुभूति में हम देखेंगे कि लाइट और शांति की वाइब्रेशंस धीरे धीरे मेरे मन को स्थिर कर रही हैं और हलचल समाप्त होते जा रहा है। और मैं इस सुंदर पॉइंट पर पहुंची हूं जहां पर लगता है परिस्थिति बातों से भी मैं शक्तिशाली हूं, पावरफुल हूं। और यही पॉइंट है जब मुझे इस प्राण प्यारे परमात्मा पिता के साथ कनेक्ट होना है, क्योंकि कुछ ऐसे गहन घाव है जो परमात्मा अनुभूति से उस घाव को हम हील कर सकते हैं। मन बुद्धि को अटेंशन देते हुए सुंदर अभ्यास करेंगे कि मैं आत्मा इस साकार दुनिया से दूर पांच तत्वों से भी दूर, आकाश, सूर्य, चांद सितारे से भी दूर अपने सुंदर घर पहुंचे, ऐसा स्थान जहां पर सर्वत्र शांति ही शांति है और मैं स्वतंत्र हूं। मेरे संकल्प, मेरे वाइब्रेशंस मेरे साथ हैं। इसी स्थान पर मेरे परम पिता परमात्मा प्राणेश्वर बाप मेरे समक्ष हैं, जो ब्राइट लाइट है। मैं आत्मा उनके साथ का अनुभव कर रही हूं। कैसे उनकी लाइट
और उनका वार्मथ, उनका निस्वार्थ प्यार के लाइट मेरे जन्म जन्म के प्यास को बुझ रहे। और उनकी स्नेह और शक्ति से मैं अपने को हील करती जा रही हूँ। मुझे महसूस हो रहा है कि जो बहुत गहन गांव है, डीप रूटेड है, वो अभी हील होता जा रहा है, भरता जा रहा है। इस सुंदर अलौकिक अनुभूति के साथ हम अपनी स्मृति को वापस इस साकारी दुनिया में लाते हम एक दृढ़ संकल्प करेंगे कि अपने को हील करते सारी सृष्टि की मनुष्य आत्माएं, प्रकृति, प्राणी, पक्षी को भी हम ऐसी सुंदर हीलिंग पावर देते एक सतो प्रधान दुनिया बनाएंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मेडिटेशन होता ही ये सुंदर अनुभव है दोस्तों। जब करते हैं तो उसके बेनिफिट्स पता चलते हैं। ब्रह्मा कुमारी छाया दीदी जी ने हम सबको ये मेडिटेशन एक्सपीरियंस कराया, इसके लिए मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों, हम आगे बढ़ रहे हैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव की ओर और हमारा आखिरी सेशन यानी वैलेडिक्टरी सेशन है। इस समापन समारोह में हम 1 घंटे में जो कुछ हमने आज और कल 2 दिवसीय इस कॉन्फ्रेंस में सीखा है, सुना है, सहेजा है, उसके बारे में बातचीत करते हैं। हमारे आखिरी सेशन के लिए हमने थीम रखा है एंशिएंट राजयोगा, विजडम एंड द इमर्जिंग फ्यूचर। इस विषय पर चर्चा को जारी रखेंगे हमारे वैलेडिक्टरी सेक्शन में। दोस्तों, ब्रह्मा कुमारीज के स्पिरिचुअल एप्लीकेशन रिसर्च सेंटर विंग का ये 15वां स्पिरिचुअलिटी इन रिसर्चर्स कॉन्फ्रेंस है। इस विशेष 2 दिवसीय ई कॉन्फ्रेंस में हमने बहुत सारे डेलिब्रेशंस किए हैं, बहुत सारे विचारों का लेन देन किया है। अब हम आ पहुंचे हैं इस कॉन्फ्रेंस के वैलेडिक्टरी सेशन या समापन सत्र की तरफ। इस सत्र का थीम हमने लिया है एंशिएंट राजयोगा, विजडम एंड द इमर्जिंग फ्यूचर। इस सत्र में हमारे साथ एक विशेष अतिथि के रूप में जुड़ रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर अशोक महापात्र, जो वाइस चांसलर हैं शिक्षा और अनुसंधान डीम्ड यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर के। ये एक्स चीफ हैं एनएससी एंड डीन रिसर्च ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस नई दिल्ली के। आइए जानते हैं उनके विचार। डॉक्टर अशोक महापात्र जी। Today we are talking how the science and spiritualism can be for the welfare of the society. As we know that the yoga or spiritualism is nothing but the connection between the Atma and Paramatma, the Jiva and Parama. Because we always believe that Jiva is the part of divine light or divine or Brahma. So when we talk about yoga and spiritualism, spiritualism is the science of connection between Atma and Paramatma. Sometimes even educated people, learned people believe the spiritualism and the religion are same thing. All religious people may not be spiritual, or all spiritual people may not be religious. Spiritualism is the belief on the Almighty God and trying to get
moksha by following the path of yoga. Yoga means connection with Atma and Paramatma. So basically, we are all trying to practice yoga in one form or other, and amongst all yoga, Rajyoga. Rajyoga means yoga, king of yoga, the emperor of yoga, or samrat of yoga. We know our sisters in Brahma Kumari for last 70 to 80 years have been propagating yoga, Raj Yoga, for the well-being of the humanity. In that, we have educated people, uneducated people, scientists, doctors, education, and so many people come in this category of getting Raj Yoga, which is beneficial to each individual, for the community and the universe at large. We all know what is yoga. Yoga is the milan between Atma and Paramatma. It is a lifestyle. Yoga is not religion. In Bhagavad Gita, Lord Krishna talks about yoga. He says, I am Yogeshwara. I taught yoga to sun god Vibhasana, and Vibhasana taught yoga to his son Ikyaku and Manu and Ikyaku. And in this way, from ancient time, yoga was translated from teachers to the student, from father to son. But unfortunately, yoga started degrading, and during Treta Yuga, Lord Krishna tells Arjuna, during Treta Yuga, yoga was only confined to royal sages like Vasishtha, Vishwamitra, Agasti, Angira, and what all Rushyamukha, the rishis which are existing in Dandakaranya, they are all rishis and yogis are uttered to some way the royal families. So they are the royal courts. So we are talking about yoga which has been slowly degraded. Today the human being is suffering. Human being is suffering because they have forgotten the lifestyle. Lifestyle is to maintain a healthy mind, healthy body and healthy soul. As we all know, every year our sisters in Brahma Kumari at Mount Abu organize body mind medicine in month of August. I also know in Harvard Medical School, Dr. Harjit Singh organized yoga conference where they talk body mind medicine. So we all know that to lead a healthy life, we need a healthy body, healthy mind and peaceful soul. As we all know, our sisters in Brahma Kumari and brothers in Brahma Kumari, they always propagate soul is peaceful, powerful and positive. And when the soul is not peaceful, when the mind is disturbed or agitated or negative, the soul cannot do anything but cannot be peaceful. The peace is a state of soul, while the stability, agitation or irritation or instability is a state of mind. Both of them are very important for healthy body, Sustha Sarira. So if we have to talk about yoga for the need of good health, then we talk about good coordination between soul, body and mind. This was the way of life in ancient India, where people are giving a lot of significance to spiritualism, that's yoga, and then stability of the mind, that means to be positive, constructive and also innovative. And less importance was given to body, that is food, dress and cosmetic or whatever it may be, which is required for body. But over the years, in millenniums, what has happened that we have changed our attitude and given more importance to our body. So the pyramid of the ancient India of lifestyle has become reversed. Here we give large amount of our stress to our body, very little to our mind and little for our soul. We always say food is for body, meditation is for mind and prayer is for the soul. So if we have a timetable where you look after your own body, look at job and duties and give time for meditation, for peace and stability and positive mindset. And we also have to have prayer for peace and solace for the soul. This doesn't happen. This doesn't happen because in a degraded life, in a nuclear life, in a broken life, we are so engaged in our day-to-day activities that we have no time for our
meditation to have a stable mind or positive mind, and we have no time for prayer for the solace of the soul. Now comes science. Science is a gift of God to humanity. Science has been there for thousands of years for the benefit of mankind. I thank millions of scientists who have dedicatedly done research for invention, innovation, discovery, so that human beings get benefit of the scientific research method and their products. We are very much thankful to our scientists for giving us what we are today by their dedicated effort. But the question has, scientists has to be spiritually developed, because for science you require a healthy body, you require a stable mind to research, and you have an innovative idea, constructive idea and creative ideas. Science cannot progress with unstable mind, disturbed mind, agitated mind, violent mind, irritated mind. So for a scientist to be sound by mind or good health of the mind is very important. Then also soul can be peaceful. As for the definition of WHO, the healthy person is complete physical, mental, social and spiritual well-being. Unless a person is spiritually healthy, mentally healthy and socially healthy, he cannot be physically healthy. What I believe, most important part of the life is spiritual health. Spiritual health will lead to healthy mind, will be stable mind, constructive mind, positive mind and creative mind. If the body, mind is soul and mind is healthy, the body has to be healthy, because a peaceful mind and a healthy mind will stimulate the immune system. And when the meditation and prayer has a strong immune system, body will be healthy, because most of the ill health either because of infection or lifestyle changes where there is a immunity imbalance or immune system is not healthy. So to make a healthy immune system, there is a strong mind, positive mind and a peaceful soul. So I believe a spiritual health is very important for all of us, also for the scientists. So also the stable mind and positive mind and a healthy body. So the requirement of yoga or spiritualism for a peaceful soul and healthy mind and a healthy body is very important. Then only the society will be healthy, individual will be healthy and country will have a healthy country, peaceful country and prosperous country. Currently we see there are disturbances, there are sickness like pandemic, there is depression, anxiety. So the people in this world are suffering currently from the ill health of the mental state, ill health of the body, and soul has become degraded over last maybe 50 to 100 years. So for our scientists, for our people, for our public, for our citizens, it is very important to understand through yoga we can achieve our goal of peaceful soul, healthy mind and healthy body. So my conclusion will be that for the scientists to do innovative, constructive and progressive research, there has to be correlation between science and spiritualism. There could be a correlation between scientists and stable mind and peaceful soul. That will lead to constructive, positive and creative research. And for the wellness of the society, for welfare of the society, for the healthy society, we want healthy body, healthy mind, healthy people, healthy family and a healthy society. A country cannot prosper with unhealthy people, unhealthy society and unhealthy country. So at the end I can tell again, this is a wonderful occasion to connect you through this international conference, through International Conference, so that we propagate the spiritualism for our public, for our doctor, for our scientists, so that people and country and the society remain healthy physically, mentally and socially. And there is always wellness and welfare of the country and the society as a whole. So I thank our sisters in Brahma Kumaris give me opportunity to connect all of you. So I feel proud and privileged that I have opportunity to talk to people like you who are elevated souls by the Rajyoga. And I also
thank my sisters and brothers of Brahma Kumari. They have been doing so wonderful job for last over 75 years, so that we are now a healthy society, healthy people, and our sisters and brothers of Brahma Kumari are doing very good job for the society. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर डॉक्टर अशोक महापात्र जी का, जो हमारे साथ जुड़े इस समापन सत्र में। इस समापन सत्र के कीनोट स्पीकर के रूप में स्पार्क यानी स्पिरिचुअल एप्लीकेशन रिसर्च सेंटर के चेयरपर्सन आदरणीय ब्रह्मा कुमारी अंबिका दीदी जी का कीनोट स्पीकर के रूप में वो अपने विचारों से हमें प्रेरित करेंगी। आइए सुनते हैं आदरणीय दीदी जी से उनके विचार। ओम शांति, ओम शांति। Children of Almighty Father, Yogeshwar and Gyan Sagar, and my divine sisters and brothers, Namaste to everybody. Today I am sharing about ancient Rajyoga meditation, which is God taught ancient Rajyoga meditation. What is it and why we need to practice Rajyoga meditation? So, seeing the world around, and after pandemic the situations is made man to rethink about spirituality and yoga because of the health and economic crisis. People are in fear, uncertainty of their jobs, and they are losing everything day by day, because of which mentally and emotionally the breakdown what we see, and also many psychological problems, depression, suicides are increasing because they are losing jobs, which is affecting to their families also. And how to empower mentally and emotionally, that is a question. Not only about the health, physically, mentally, economically and socially, the breakdown what we see, nothing is okay, where we have to find peace, happiness in their life. That is not at all seen. Each second they are living with tension and pressures. How to face these challenges? And in the society, if we see many kinds of challenges and political turmoils which is affecting the society, and around the world, the terrorism what we are seeing, the terror what people are experiencing, that is the biggest question. In all the way, the whole uncertainty of the health and the economy has made the world flat. So the solution for all these things is the ancient God-taught Rajyoga meditation, which is the part of spirituality. Only with the spiritual guidance we can practice Raj Yoga. The yoga means it is not that only to nill the mind or to control waste thoughts or negative thoughts. Or yoga is not just experiencing peace. Yoga is not just for experiencing concentration, but it is something beyond all these things, above all these things. Why Rajyoga meditation is so famous? It is because of its benefits and also the siddhis, what the fruit of Rajyoga has to be experienced in life, that is beyond the thought, beyond their thinking, because yoga is nothing but shifting consciousness to reality, that is my eternal reality. Yoga means it is the connection or the link with the source, understanding the source and realizing the relationship with it, then yoga is possible.
So Raj Yoga, why Raj Yoga? Because yoga, the connection makes me the king, the master of my own mind and my emotions. Not only mentally but also physically, it makes me to conquer the senses where I can rule myself according to the situation. And yoga is nothing but, Raj Yoga is nothing but where I can really go within and come out with a tremendous energy, where I can channelize that in a positive way. So if I share this practically, it is with the 3 steps. That is, the first step of Raj Yoga makes me to travel within, go within and see myself, my potentials and the weaknesses and the tremendous energy what I have, and then channelize it in a practical way to face all the challenges in life, to keep myself mentally, emotionally stable at all kinds of circumstances. That is the first step where I travel within. And the second step of meditation is to travel above, beyond the cosmos, to realize my creator, to realize the source, the supreme consciousness, understanding, realizing, connect with him. That is the second process of Raj Yoga, where I myself, when I realize that I am not this physical body, I am not just a human being, but human and the being, body and the light being. That is, I am the spiritual being, I am soul or a spirit. Medically, I am the psyche who is working within the body, and through the body, the metaphysical entity, what I work through the mind, intellect and sanskara, the thought is translated to action through the senses, physical senses. So when I realize this, then naturally the next realization comes, then who is my creator? Like bodily parents are there, then what am I, from where I came, and who are my parents? That is, my existence, the spiritual existence proves the spiritual father. That is God, who is respected by one and all the religions do respect the incorporeal God Father Shiva with the different names. God is supreme light. That is the main thing to realize, is beyond all the physical limits. So I, the soul, in the second step, I establish the relationship with my long lost, now found Father, who is most loving, most caring, beloved Father, whom I was calling for the help. So when I realize this, the upward journey beyond the cosmos to realize the origin of myself and my Father is the supreme abode, and establishing a link. In the second step, I tap all the tremendous energy and the values what I need in day-to-day life. So in the second step, when I empower myself and enlighten myself, then naturally I do feel that complete enlightenment and empowerment of my own self, which leads to the third step of Raj Yoga, is the outside journey. Whatever I have gained in Raj Yoga meditation, with a link, with a connection, then naturally to face the challenges outside, that is in this world, outside the body, in the society, whether it is a health issues or the job issues which connects with the economy, or the social issues or the family's issues. So the values and the powers what I gain, I keep myself stable, and without involving the mind emotionally also, I can face these challenges or the pressures
with peaceful and happy mood and always relaxed. This makes the total overall health, physically, mentally, socially and economically, to be sound and always stable. Whatever may be the situation, I can face it. That is the confidence what I gain. Those self-esteem, self-respect, self-confidence what I gain in meditation, which makes me always to be powerful, and also contribution of my vibrations and my powerful thoughts to the world and the society at large will be much more, because whatever the powerful peaceful vibrations in connection in meditation what we experience, that gains a lot, that benefits a lot, because of which yoga makes me to be fearless, because even 1 second of meditation makes me to conquer 36 hours of accidental death. So the Akal Maran is not there. So, and also health will be improving, because health scientists do know, researchers do know, the effect of thoughts and the emotions on the physical body is, that is the source for all the diseases. So we should be careful about our thoughts, always to have pure powerful thoughts and right decision in right time. So we need Rajyoga. So Prajapita Brahma Kumari's Ishwari Vishwavidyalaya, the SpARC Wing is trying to connect with the scientists and researchers of the many organizations, collaborating with the organization and try to find the science behind Rajyoga meditation. That is Indian Institute of Science and NIMANS of Bangalore and Cancer Institute of Bangalore is also collaborated with the SpARC Wing, and the universities which connects with the mind and brain, that is Zurich in Switzerland and Delhi DRDO and AIMS of Patna and Gujarat University and Multiversity of the Pune. And not only that, in Chennai also recently MOU has been found out with MGR University. So these universities are already collaborated and working with the SpARC to find out the benefits of this ancient God-taught Rajyoga on human body and society at large, so that I call upon all the researchers and scientists to really work on this, and so that we can give a big solution to the whole humanity, so that they should rest in peace and with happiness and with all the stability. Thank you. Om Shanti. बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अंबिका दीदी जी का, जो ब्रह्मा कुमारीज के वीवीपुरम बेंगलुरु जोन की निदेशिका हैं और साथ साथ चेयरपर्सन है स्पार्क विंग के। दोस्तों, वक्त है फिर से एक मेडिटेशन एक्सपीरियंस को करने का। हमारे साथ मेडिटेशन एक्सपीरियंस को कराने के लिए ब्रह्मा कुमारी अनीता दीदी जी जुड़ रहे हैं, जो एक वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका हैं और जोनल कोऑर्डिनेटर हैं स्पार्क पंजाब के। आइए उनसे सुनते हैं गाइडेड मेडिटेशन के बारे में और साथ साथ करते हैं राजयोग की अनुभूति। ओम शांति। राजयोग एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा आत्मा परमात्मा से ऐसे मिलन मनाती है जो समस्त ईश्वरीय शक्तियां उसके जीवन में उतर आती हैं, और ये ईश्वरीय शक्तियां कमाल का कार्य करती हैं। ये रामबाण औषधि हैं, ऑल इन वन है। चाहे पारिवारिक क्षेत्र हो या व्यापारिक, राजनैतिक क्षेत्र हो या किसी भी प्रकार की विचित्र प्रकार की भी समस्याएं क्यों न हो, लेकिन ये राजयोग द्वारा प्राप्त ईश्वरीय शक्तियां काम करती हैं। कैसे करती हैं? ये हमारी मनोस्थिति को बदलती हैं, हमारा एटीट्यूड चेंज होता है, हमारे अंदर सद्गुण वास करने लगते हैं, अवगुण निकलने लगते हैं।
दूसरों से अपेक्षाएं समाप्त होकर देने की भावनाएं उत्पन्न होती हैं, क्षमा की शक्ति पैदा होती है, सबके साथ सहयोगी बन सकते हैं और संतुष्टता जीवन का अंग बनने लगती है और परम पिता के परम मिलन से जो परमानंद प्राप्त होता है, वो आनंद संसार से प्राप्तियों की इच्छाएं परिवर्तन करने लगता है, तो एक सुंदर भविष्य का निर्माण होता है। तो चलिए ऐसी सुंदर प्रभु मिलन की यात्रा की ओर चलते हैं। समेट लेंगे अपने आप को, चारों प्रकार की इंफॉर्मेशन से अपने पास आ जाएंगे, पूछ लेंगे अपने आप से कौन हूं मैं, जवाब देंगे अपने को ये मिट्टी का पंच तत्व वाला शरीर बाहरी आवरण मात्र है, मैं इसके अंदर इसको चलाने वाली एक दिव्य शक्ति आत्मा हूं। कहाँ हूं? उस चेतना की ओर ध्यान को एकाग्र करते हैं। पूरे शरीर में एक वाइब्रेशन, एक स्पंदन महसूस हो रहा है, जो जीवनी शक्ति है, जो आत्मा से प्रवाहित हो रही है। चलिए महसूस करते हैं उसे। ध्यान ले चलेंगे एक बार पैरों की ओर। पैरों के अंदर का वाइब्रेशन फील करें। एक जीवन की ऊर्जा है, फील करें धीरे धीरे। ये एनर्जी ऊपर आ रही है लेग्स की ओर, लेग्स से ऊपर स्टमक की ओर एक वाइब्रेशन है। इस ऊर्जा को फील करें। हार्ट, लंग्स, आर्म्स, एनर्जी ऊपर आ रही है। हेड, फेस, पूरी एनर्जी सिमटती हुई फोरहेड पर आकर एक स्टार बनकर चमकने लगी। फील करें मस्तक के बीचों बीच एक डिवाइन स्टार चमक रहा है। सोर्स ऑफ एनर्जी, प्राण शक्ति, आत्मा, ये मैं हूं, इस शरीर का प्राण। शांत आत्मा, पवित्र आत्मा, फील करें मस्तक वाले स्टार से निकलता सफेद शांत पवित्र प्रकाश, जो पूरे ब्रेन में समाकर उसको जिंदा कर रहा है। पूरा ब्रेन वाइट लाइट से भर गया। ये सफेद प्रकाश फेस के अंदर समा गया, बाजुओं में जा रहा है, अंदर तक शांति उतर रही है। पेट में ये प्रकाश शांति की ऊर्जा के रूप में समा रहा है। लेग्स के अंदर समा गया। शरीर के रोम रोम से बाहर निकल रहा है। ध्यान मस्तक वाले सितारे पर एकाग्र करते हुए अपने को कह दें, मैं एक शांत
आत्मा हूँ। शांति की किरणें फैला रही हूँ। ये शरीर मेरे ऊपर एक कवर जैसा है। इसमें भी मेरा प्रकाश भरा है। मैं पॉइंट ऑफ पीसफुल लाइट हूँ। मैं आत्मा, परमात्मा की संतान हूँ। कहाँ है मेरे पिता? इस शरीर की हदों से पार, इस ग्लोब से पार एक दिव्य लोक है, जहाँ वो परम ज्योति परमेश्वर निवास करते हैं। फील करें, ग्लोब से ऊपर सूर्य, चांद, सितारे, नीला आसमान, उससे पार एक लाल आसमान, दूर तक फैला शांत लाल प्रकाश। ये ब्रह्मलोक है, शांति का देश, जहाँ शांत आत्माएं अपने मूल पॉइंट ऑफ लाइट स्वरूप में निवास करती हैं। ये आत्माओं का देश और परम पिता का घर है। यहाँ पर परम ज्योति बिंदु, परम प्रकाश स्वरूप परमात्मा की ज्योति दीप्यमान है। जगमग करता महाज्योति बिंदु स्वरूप मेरे प्यारे पिता का, उनसे निकलता शांत, पवित्र, शक्तिशाली प्रकाश दूर दूर तक फैल रहा है। मेरे मन को आकर्षित कर रहा है। मैं महसूस करती हूँ मेरे प्यारे पिता मुझ बच्चे की ओर देख रहे हैं। अपने दिव्य प्रकाश से उनका ये परम पवित्र दिव्य शांत प्रकाश ऊपर से नीचे की ओर उतर रहा है। मस्तक पर स्थित मुझ आत्मा सितारे को छू रहा है। मुझ पर ये दिव्य तरंगे शांत प्रकाश की उतर रही हैं। मुझे ये प्रकाश छू रहा है, जैसे मैं अपने पिता की गोद में हूँ। उनके इस अनंत शांतिमय सुखमय प्रकाश में निश्चिंत हूँ, आराम की अवस्था में हूँ। मेरे विचारों की गति धीमी हो गई है। मेरा मन चुप सा होने लगा है। परम पिता के दिव्य स्वरूप को देखता है और उनके इस परम प्रकाश के स्पर्श को फील करता है। मैं आत्म ज्योति परम पिता के दिव्य प्रकाश की किरणों में समाई हूँ। अंतर की आंख टिका दें। परम धाम में जगती उस परम ज्योति पर और उनसे उतरती शांत पवित्र किरणों पर इस प्रकाश को बरसने दें।
अंदर समाने दें। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रह्मा कुमारी अनीता दीदी जी का, जिन्होंने इतना सुंदर मेडिटेशन एक्सपीरियंस कराया। इस 2 दिवसीय ई कॉन्फ्रेंस में हमने अनेकों बार मेडिटेशन को एक्सपीरियंस किया है। हम आशा करते हैं कि आप इन मेडिटेशन एक्सपीरियंस को अपने साथ ले चलेंगे और आगे की जीवन की यात्रा में भी मेडिटेशन को अपने लाइफ का हिस्सा बनाएंगे। अब इस वैलेडिक्टरी सेशन के आखिरी वक्ता की तरफ हम बढ़ते हैं। भविष्य के लिए हमें क्या करना है? इस कॉन्फ्रेंस में हमने बहुत सारे विचार तो सुन लिए, बट इसे आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है? और इतने सारे जो महानुभाव हमारे साथ 2 दिनों में जुड़े, उन सब का धन्यवाद ज्ञापन भी तो आवश्यक है। वोट ऑफ थैंक्स देने के लिए और फ्यूचर एक्शन प्लान को बताने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूं ब्रह्मा कुमार संजय भाई जी को, जो हेडक्वार्टर्स कोऑर्डिनेटर हैं स्पार्क ज्ञान सरोवर माउंट आबू से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमार संजय भाई से। ओम शांति। इस 2 दिवसीय 15th SIR कॉन्फ्रेंस में आप सबका हार्दिक स्वागत है। कल से यह सम्मेलन चल रहा है और कल से ही हम सब एक से बढ़कर एक अनुभवी महान वक्ताओं को सुन रहे हैं, उनके विचारों को सुन रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। स्पार्क ब्रह्मा कुमारीज का एक रिसर्च विंग है जो राजयोग के ऊपर अन्वेषण का कार्य करता है, रिसर्च वर्क करता है। हम सब जानते हैं कि आध्यात्मिकता का हम सबके जीवन में कितना बड़ा रोल है। राजयोग में हमारे जीवन की सभी समस्याओं को हल करने की क्षमता है। चाहे संसार की स्थिति कैसी भी क्यों ना हो, यदि हमारे जीवन में अध्यात्म का बल है, राजयोग का अभ्यास है, तो हम अपने जीवन को सहज रीति जी सकते हैं, एक तनाव मुक्त जीवन का आनंद ले सकते हैं। परंतु संसार आज इसके महत्व को समझ नहीं पा रहा है और कहीं न कहीं यही ध्येय है स्पार्क विंग का, लोगों को राजयोग के महत्व को बताना। परंतु आज का इंसान इतना अधिक बुद्धिजीवी तार्किक हो गया है कि हर बात के पीछे वो प्रमाण चाहता है, प्रूफ चाहता है। किसी भी बात को वो सहज स्वीकार करना नहीं चाहता है। तो यही प्रयास पिछले 25 वर्षों से स्पार्क विंग करता आ रहा है कि कैसे हम राजयोग के महत्व को संसार के सामने उनके ढंग से रखें। और इसमें आप सबका यानी विज्ञान जगत के जो लोग हैं उनका सहयोग अति आवश्यक है। बिना विज्ञान की मदद के अध्यात्म को सहज और सरल रीति संसार तक नहीं पहुंचाया जा सकता, और जब तक सहज और सरल भाषा में संसार तक इसके महत्व को हम नहीं पहुंचाएंगे, तब तक लोग इससे लाभान्वित नहीं हो पाएंगे। पिछले 15 वर्षों से स्पार्क के बैनर तले सर कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है और इस कॉन्फ्रेंस के पीछे लक्ष्य यही रहता है कि विज्ञान जगत के जो लोग हैं, जो रिसर्च स्कॉलर्स, रिसर्चर्स हैं, उनको हम परमात्मा के घर के नज़दीक लाएं, उन्हें राजयोग के महत्व को बताएं और फिर इस पर शोध कार्य कर वो लोग अपनी रीति संसार को इसके महत्व को बताएं। इसी लक्ष्य से पिछले 15 वर्षों से स्पार्क विंग स्पिरिचुअलिटी इन रिसर्चर्स के बैनर तले ये कॉन्फ्रेंस करता आ रहा है। अभी भी कोरोना का प्रभाव संसार से पूरी तरह मिटा नहीं है, इसलिए चाह कर भी हम इस कॉन्फ्रेंस को फिजिकली नहीं कर पाए इस वर्ष। हर वर्ष ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय पर इसका आयोजन होता है, पिछले 15 वर्षों से होता आ रहा है। परंतु इस वर्ष संसार की दशा को देखते हुए हम लोगों ने इस कॉन्फ्रेंस को ऑनलाइन करना ही बेहतर समझा। परंतु इसका भी अपना एक फ़ायदा है, यहाँ पर हम बहुत सारे लोगों को एक साथ एकोमोडेट नहीं कर पाते,
पर ऑनलाइन में ये बंधन समाप्त हो जाता है। इसमें अधिक से अधिक संख्या में लोग भाग ले पाते हैं। तो इस तरह से ये कॉन्फ्रेंस भी बहुत सफल रहा है। स्पार्क हर वर्ष भिन्न भिन्न प्रकार के अनेकों कार्यक्रम करता है। हर वर्ष के लिए वो अपना एक एक्शन प्लान तैयार करता है। केवल वर्ष में एक ही सर कॉन्फ्रेंस नहीं, पर इस तरह के कई कॉन्फ्रेंसेस किए जाते हैं। हर वर्ष के लिए एक एक्शन प्लान बनता है। इस वर्ष के लिए भी स्पार्क ने अपना एक एक्शन प्लान तैयार कर रखा है। जैसा कि हमने बताया कि स्पार्क राजयोग के ऊपर रिसर्च करता है और इसके लिए भारत और विदेश की जो भी प्रमुख रिसर्च संस्थाएं हैं, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उनसे मिल करके ये अपना शोध कार्य करता है। भारत के बहुत सारे ऐसे रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनमें आज राजयोग के ऊपर रिसर्च चल रहा है, जिनके कोलैबोरेशन के साथ हमारा स्पार्क विंग रिसर्च कार्य कर रहा है। जैसे CCS निभांस बेंगलोर, CNS IISc बेंगलोर, मेडिकल इंटेलिजेंस लैंग्वेज इंजीनियरिंग IISc बेंगलोर, डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोलॉजी एम्स पटना, राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर न्यू दिल्ली, इंटरनेशनल इंडिया मल्टीवर्सिटी पुणे, ऐसे और भी कई संस्थाएं हैं जिनकी मदद से राजयोग के ऊपर रिसर्च किया जा रहा है और राजयोग को जीवन के भिन्न भिन्न पहलुओं में प्रयोग कर उसके रिजल्ट को देखने मापने का कार्य किया जाता है और फिर सहज रीति इसे संसार को बताने का प्रयास किया जाता है। आने वाले वर्ष में यानी 2021-22 में और भी कई नई रिप्यूटेड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेट करके इस रिसर्च वर्क को और आगे बढ़ाने का हम सबका प्लान है। परंतु ये सारे कार्य, ये सारी सेवाएं आप सबकी मदद के बिना संभव नहीं हो पाएंगी। आप सबका सहयोग आवश्यक है। कहा भी जाता है कि इस संसार को यदि बेहतर बनाना है तो विज्ञान और अध्यात्म दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा। जब तक ये दोनों एक साथ सहभागी होकर कार्य नहीं करेंगे तब तक ये संसार कभी भी बेहतर नहीं बन पाएगा। इसलिए विज्ञान जगत के लोगों से हमारा आह्वान है कि आप जिस भी फील्ड में हैं अपना अमूल्य समय निकाल करके राजयोग के ऊपर शोध कार्य करने में हमारी जरूर सहायता करें, ताकि आज का इंसान जो इतना दुखी और अशांत है कम से कम एक शांत सुखमय जीवन का आनंद ले सके। आज इस सम्मेलन का दूसरा और अंतिम दिन है और हम उसके वैलेडिक्टरी सेशन में बैठे हैं। तो हम अपने सभी वक्ताओं का और सभी श्रोताओं का दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे। धन्यवाद की श्रृंखला में हम सबसे पहले उड़ीसा के गवर्नर हिज एक्सीलेंसी प्रोफेसर श्री गणेश लाल जी का हम धन्यवाद करते हैं। आपने अपनी व्यस्ततम दिनचर्या से समय निकाल करके इस सम्मेलन को संबोधित किया, अपनी शुभभावनाएं दी, इसके लिए हम दिल से आपका आभार मानते हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का हम दिल से आभार मानते हैं। आपने भी अपना अमूल्य समय दिया और इस सभा को संबोधित किया और हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी आप सबका प्यार और सहयोग हम सबको इस स्पार्क विंग को सदैव मिलता रहेगा। इसके साथ डॉक्टर महेश शर्मा जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पद्म भूषण डॉक्टर विजय भाटकर जी, फादर ऑफ इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, पद्म भूषण डॉक्टर VK सारस्वत जी, मेंबर नीति आयोग, पद्मश्री डॉक्टर AR होसूर जी, इंडियन बायोफिजिसिस्ट, हम आपका भी बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। आपने भी अपना अनुपम सहयोग इस कॉन्फ्रेंस को दिया। इस कॉन्फ्रेंस की विशेषता ये रही कि ये वैसे तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होता ही है, हर वर्ष
हम अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम कॉन्फ्रेंस का, हर वर्ष हम अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन करते हैं। तो इसमें विदेश के भी बहुत सारे रिसर्चर्स, वैज्ञानिक, विज्ञान जगत के लोग सम्मिलित होते हैं। इस बार भी कई सारे विज्ञान जगत के बड़े बड़ी हस्तियां इसमें सम्मिलित हुई, खास करके डॉक्टर स्टीवन लॉरेंस, न्यूरो साइंटिस्ट, बेल्जियम, हम आपका भी धन्यवाद करते हैं। इसके अलावा और भी कई पद्मश्री, पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित हमारे स्पीकर्स ने इसमें भाग लिया और अपने अनुभवी बोल को हम सबके साथ साझा किया। हम आप सबका दिल से धन्यवाद करते हैं। साथ ही दादी रतन मोहिनी जी, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ ब्रह्मा कुमारीज, खास हम दादी जी का धन्यवाद करना चाहेंगे। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी दादी की दुआएं, उनकी ब्लेसिंग्स हम सबको मिली और हम सब जानते हैं कि बिना दादी की ब्लेसिंग के हमारा कोई भी कार्यक्रम संपन्न नहीं होता। एक लंबी आयु में भी, इतनी बड़ी आयु में भी दादी इतनी एनर्जेटिक रहती हैं और हम सबके एक छोटे अनुरोध से आप अपना समय निकाल करके हम सबको अपनी दुआओं से पोषित और पल्लवित करती हैं। दादी जी, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। साथ ही साथ ब्रह्मा कुमारीज के ज्ञान सरोवर परिसर के डायरेक्टर डॉक्टर निर्मला जी, जो ब्रह्मा कुमारीज की ज्वाइंट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड भी हैं, हम आपका भी दिल से धन्यवाद करते हैं। इसके साथ साथ और भी हमारी जो इस विश्वविद्यालय की वरिष्ठ बहनें हैं, जयंती बहन जी, अंबिका बहन जी, हम आपका भी बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। जयंती बहन जी विदेश में रहते हुए, जो कि ब्रह्मा कुमारीज की एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं, उन्होंने भी अपना समय निकाला और हम सबको संबोधित किया। दीदी, हम आपका भी दिल से धन्यवाद करते हैं। साथ में अंबिका बहन जी, जो कि स्पार्क विंग की चेयरपर्सन है और जिनकी प्रेरणा से हम सब पूरे वर्ष अनेकानेक कार्यक्रम करते हैं। दीदी की हमेशा ये इच्छा रहती है कि जल्दी से जल्दी लोग राजयोग के महत्व को समझें, ताकि उनके जीवन में सुख और शांति आए, उनके जीवन से थोड़ा तनाव कम हो सके, और हम सबको हमेशा प्रेरित करती रहती है इस तरह के कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए। तो दीदी, हम आपका भी दिल से धन्यवाद करते हैं। साथ ही साथ हम अवेकनिंग टीवी चैनल का भी दिल से धन्यवाद करते हैं, और अवेकनिंग टीवी चैनल के साथ साथ स्पार्क की जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, जो उसकी ऑर्गेनाइजिंग टीम है, हम उसका भी धन्यवाद करना चाहेंगे। किसी भी कार्यक्रम को करना, खास करके जब वो ऑनलाइन हो, तो उसमें बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है। एक कार्यक्रम को टीवी पर टेलीकास्ट करने के लिए बहुत समय, बहुत मेहनत, बहुत बड़े टीम वर्क की ज़रूरत है, और वो टीम वर्क हमारे अवेकनिंग टीवी चैनल के पास है, जिनका सदैव बहुत प्यार से हम सबको सहयोग मिलता है। तो हम अवेकनिंग टीवी चैनल के पूरे टीम को भी दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे। और अंत में परमपिता परमात्मा शिव बाबा, जिसे हम सब प्यार से शिव बाबा कहते हैं, हम अपने परमपिता को भी दिल से धन्यवाद देते हैं। परमात्मा ने हम सबको एक विजन दिया है कि आने वाले समय में ये संसार एक बेहतर संसार बनेगा, जिसे हम सब सतयुग के नाम से जानते हैं, जिसे हम अल्लाह के बगीचे के नाम से जानते हैं। ये संसार कभी ऐसा था, पुनः इसको बनना है, और उसके लिए जो सबसे बड़ा टूल है वो है राजयोग। तो राजयोग को समझना, उसे जीवन में शामिल करना, ये परम आवश्यक हो जाता है। राजयोग ही वो माध्यम है, वो साधन है, जिसके द्वारा हम सब अपने जीवन में मूल्यों की पुनर्स्थापना कर सकते हैं। हम सब अपने संस्कारों का परिवर्तन कर सकते हैं। हम सब अपने पापों के बोझ को अपने सिर से उतार सकते हैं, और समाज में फिर से एक सुंदर वातावरण क्रिएट कर सकते हैं। तो इस सुंदर विजन के साथ सुंदर जो शिक्षाएं मिलती हैं परमात्मा से, जो हम सबको दुआएं मिलती हैं, उसके लिए हम परमात्मा शिव का दिल से धन्यवाद करते हैं। वही हमारे बैकबोन हैं, नहीं तो हम कोई भी कार्यक्रम करने में सफल नहीं हो पाते। तो दिल से कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए
ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद संजय भाई जी का, जिन्होंने हमारे सभी महानुभावों का धन्यवाद ज्ञापन किया और साथ साथ फ्यूचर के प्लान के बारे में भी हमें एक आउटलाइन दिया। मैं संजय भाई जी का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। दोस्तों, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आप सभी लोगों का जो आप हमारे साथ इस 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस में जुड़े, और आपके साथ जुड़कर हम सबको भी अच्छा लगा कि हम सब नए विचारों को एक दूसरे के साथ बांट सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं, कुछ सिखा सकते हैं। और इस कॉन्फ्रेंस में शायद हमने यही प्रयास किया था कि आध्यात्म के जगत के क्षितिज पर भी कुछ नए परिवर्तन हो रहे हैं। क्या हमारी नज़र वहाँ है? और मैं आशा करता हूँ इन 2 दिनों में हमारी नज़र भी वहाँ गई होगी। भविष्य में ऐसे ही अनेकों कार्यक्रम आते रहेंगे जिसमें मुलाकात होती रहेगी। यहीं आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे। आप रखिए अपना बेहतर ख्याल। ब्रह्मा कुमारीज और स्पार्क विंग की तरफ से आप सभी का पुनः धन्यवाद। नमस्कार। ओम शांति। आप देख रहे हैं इवनिंग मेडिटेशन। आगे देखिए अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज।